जी तो ये है जी शाही हमाम लाहौर में। तो दिस पीस ऑफ आर्ट। And we have no idea about it, but what is the purpose of all of these? But we will show you। कि आप देख सकते हैं आर्ट। ये इनके मेन रिसेप्शन है जी शाही हमाम की। लेट मी शो यू द पर्पस ऑफ दिस एरिया। दिस वाज द मेन रिसेप्शन और इट कंटेन द, ये आपके सारे लिखा हुआ है। एंड दिस इज़ हाउ पीपल वेड एंड इट्स अ काइंड ऑफ रिसेप्शन प्लेस हुआ करते थे यहाँ पर। And Shahi family के लोग आके they used to sit and talk and have some hot bath over here. So ये है main reception, followed by this place. I don't know its exactly purpose क्या है, but it seems like a waiting hall, something like that. कह सकते हैं कि वेयर जो है ना वाटर नॉर्मली यूज्ड टू बी रिसाइक्ल्ड। ये जी ये सारे एरियाज ऐसे हैं जहाँ पर जो है ना चेंजिंग एरियाज, चेंजिंग रूम एंड एग्जिट प्लेसेस हुआ करते हैं। ये सारे फ्यू एंटीक पीसेस फ्रॉम दैट एरा। ये This is used for a bamboo and for lighting purpose. And in Kajana we have no idea. These are all the decoration pieces. Decoration pieces Right. which is used to be placed. You can see different animals. Their portrait is here. Yes. Dog, dinosaur. Look at here. Here's a portrait of dinosaur. Yes. This one. Right. So this again a beautiful art and Mughal architecture जिसे आप कह सकते हैं। तो ये है जी यहाँ पर and there is some written history over here as well. यूनिसेफ जो है ना इसको अभी ऑन करते हैं इन सारी चीज़ों को। This is again a piece of art directly जो उसी वक्त के हैं। For example, let's see, this is the piece of art coming from Mughal Empire. ये भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उस वक्त यूज़ हुआ करते थे। And this is again Yes, I will explain you about this. Shahi Hammam, old city of Lahore, best new architectural restoration project in South Asia. Yes, Mr. William posted a tweet in February 2017, right, about this Hammam of restoration of this Shahi Hammam. So yes, यहाँ पर There's another way upstairs. There's upstairs. Let's go and explore where this place is going. कि ये कहाँ Wow, जाता it's है? horrific, man. It's a kind of oh, it seems like it's going up in the rooftop, but it's not allowed for us to go upstairs. So we are going back again. Are you sure you're not going? Yes, it's locked. Locked? So this is the Shahi Hammam, ठीक है जी, और well preserved। ये है जी आए हैं।
This is another जो है ना small What is or a this? separate hammam. We exactly don't know. But this is some pictures. Cold bath session like this one were meant for people who were attended by a hammami. There were probably several of these private pools, through only two are now left. Sorry. The water was spread from This is the the steps history built written here. into the wall. The water ran from There is a main reception. There is the upper a floor section. small जो है ना bath available. You know, आप यहाँ पर Wazir इस तरह Khan. की चीज़ें भी आप देख सकते हैं. Some This was kind of Wazir shop Khan. and things. These kind of main walls originally available. This looks like a hidden escape way, right? तो ये हो सकते हैं seems like but maybe जो है for the collection of running water and other stuff के लिए बनाया गया. It looks like It could be a water channel as well. system or something like that. So Hidden way out from this one. oh, there's another beautiful. Oh my god, this place is fantastic. You know, I can't imagine. I just thought we just finished the area, but we entered into some new places. So this is another hammam. You know, ये है जी. अब I don't know इन सब के क्या purpose है, but it seems like multiple spots have been made to sit and people. ये सारे जो है ना channel water आगे पीछे से आ रही है and there is an exit place as well जहाँ से पानी बाकी चीज़ें निकलने की जगह है. And it is all again. That's a beautiful view. ये बहुत ही जो है ना डिफरेंट अंदाज में डिज़ाइन हुआ हुआ. इट्स नॉट अ सिंगल प्लेस, मल्टीपल प्लेसेस आर अवेलेबल जिसमें कम से कम एटलीस्ट आई थिंक 3 to 4 प्लेसेस आर देयर. मैं यहाँ पर कुछ हिस्ट्री लिखी हुई है. आई विल शो इट टू यू. लेट्स सी इसका क्या मतलब है. दिस इज़ द अनदर This was actually a kind of heating system, right? तो जब इसके हमाम के नीचे जो है ना हीटिंग होते थे उसके धुआं वगैरह निकलते थे और साइडों से जो चिमनी बने हुए ऊपर तो वहाँ से ऊपर निकल जाते थे. उस काइंड ऑफ हीटिंग सिस्टम और नीचे से पानी गर्म होकर यहाँ हमाम के बाहर आते थे. तो ये आप पढ़ सकते हैं. इट्स अ काइंड ऑफ हॉट बाथ. तो यहाँ पर जो है ना देयर इज प्रॉपरली हीटिंग सिस्टम अवेलेबल देयर जहाँ से हीटिंग करके देन स्टीम विल बी यूज्ड टू you know steam bath you can say. तो this is the purpose. पूरी इसके नीचे underground it seems like वहाँ पर जो है ना furnace type के बनेंगे and steam will be used for the bath, you know? So it's a beautiful place, you know. And there is another wow. So if you look at this it not end here. यहाँ पर ख़त्म नहीं हो रहा. एंड यहाँ पर एक और हमारे पास एक हिस्टोरिक थिंग्स आर हैपनिंग एंड दिस इज दिस प्लेस. अब इफ़ यू चेक इट कि इन सब का क्या पर्पस है आई डोंट नो अबाउट इट बट वी हैव सम काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल हियर जहाँ पर हमें थोड़ी बहुत रिटर्न लिखी है बट इट सीम्स लाइक अ हॉट बाथ. यहाँ पर देयर इज अ सेपरेशन एंड Actually, all these stuff, the tunnels were underground, right? There was a hammam on the top. So these were the purpose of these tunnels was to heat up all the hammam and surroundings, water और सारे जो है. अच्छा the tunnel का मकसद it seems like the main tunnel is connected with some sort of furnace जो कि बाहर से वहाँ से steam को जो है ना कलेक्ट करके ओवरऑल टेम्परेचर ऑफ पूरे एरिया की लाइक सेंट्रल कूलिंग एंड सेंट्रल हीटिंग सिस्टम की तरह जो है ना इसको बनाया हुआ है. ऑल ऑफ द हमाम आर कनेक्टेड विद दीज बिग टनल्स एंड नॉर्मली दीज टनल आर नॉट यूज्ड फॉर द वाटर चैनल. मोस्ट ऑफ दीज आर यूज्ड फॉर द स्टीम मूवमेंट, यू नो. सो इट सीम्स लाइक अंडरग्राउंड टनल इज यूज्ड फॉर स्टीम पर्पस. तो ये सेंट्रल हीटिंग एंड सेंट्रलाइज कह सकते कूलिंग तो नहीं यू कैन से द सेंट्रलाइज हीटिंग पर्पस के लिए जो है ना सर्दियों में इट माइट बी यूज्ड. और देयर इज सम इंफॉर्मेशन रिटन ओवर हियर people can see it. ये रहा जी देखें
hot water tank was part of the hammam. You can see it. So it's a beautiful piece of art. So it's a kind of central, you know, आप कह सकते हैं कि उस वक्त के ज़माने के जो है ना, yes, there's जो है ना another portion over there. Look here, look. Can you turn the camera down? There's a way for water, I think. Yes. This was a path for entry or exit of the water. There were small blue channels here. इस तरह के छोटे चैनल्स मल्टीपल लोकेशन पे नज़र आते हैं. It seems like for the water inlet and outlet, but don't know about it. But it seems an exit. यहाँ से हम जो है ना घूम फिर के there is another place. Yes, you can see over here it's the same purpose. Internal talents are available here. Multiple rock beams are there. The purpose is not clear कि how they use these, इनके क्या exactly purpose थे, but most of them seems like जो है ना digging के बाद इनको नीचे से निकाला गया. So here is another open area. ये राज. And this is a kind of exit we have over here. और ये जो टनल है it seems like all over जो है ना मिल जाते हैं इसके either, but most of the people are up to the point this tunnel is not for the collection of water, rather than these tunnels are used for, you know, steam and for some other purposes. So thank you so much for all the tunnels are interlinked. हाँ, most of the tunnel, yes, सब interlinked ये with हमाम the जितने भी सारे जो है ना interconnected with these tunnels, with this properly जो है ना designed हुए हुए to these tunnels, ये properly linked है सारे हमाम्स. So this is all about the Shahi Hammam, which is located at near Delhi Gate in Lahore. Old Lahore में ये available है. ठीक है जी. Anyone came and see the, you know, architecture of Mughal Empire in India subcontinent. So it's a beautiful piece of art for you know, architectural studies, you know, for archaeologists and other people. So hope you people will enjoy it. ठीक है जी. Thank you so much for watching us.